digital marketing framework. So I think it will increase my thought in digital marketing and improve my thinking ability on it. Thank you for this opportunity, sir. That's great. Thank you so much, Shivam. I thank you for this, that you have joined and you are having such inputs also. And I will try that I give the best of the delivery. Thank you. Yes. Anybody else? I saw Gulfam hand risen. So this is going to be the last introduction. Who is going to be the last fortunate? Okay, Gulfam. Tell me. हाँ गुलफाम आप को मैंने अनम्यूट करा था. 1 minute. Let me do it for you. One minute, please. Yes, Gulfam, can you speak now? I think हाँ अब आप बात कर सकते हैं सर गुलफाम, मेरा नाम बताइए. सर मेरा नाम गुलफाम अंसारी है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से हूँ जी. और मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है और मैं अभी कोई काम की तलाश में हूँ. अच्छा, अच्छी बात है. दैट्स धन्यवाद. गुड. नाइस नाइस गुलफाम. और इस जी वर्कशॉप सर. से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद करते हैं? एनीथिंग? सर हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद आपसे हमें कुछ नया मार्गदर्शन मिले जिससे कोई भविष्य में उन्नति करें. Very, very nice. Thank you. Nice. Of course, Gulfam, we will talk about that. और कोशिश ये करूंगा कि चीजें आपको इस तरीके से बताएं कि आपका ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस. जी जी सर. ओके, परफेक्ट. सो यू माइट बी वंडरिंग कि इंट्रोडक्शन हमने ऐसा क्यों किया. तो मैं यहाँ पे हो सकता है कि देयर आर पीपल हु आर कैरिंग मोर एक्सपीरियंस एंड दे आर एल्डर टू मी. सो मेरा ये तरीका है, मैं ये तरीका फॉलो करूंगा. आई हैव दिस मेथड कि बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन एक्सक्लूसिवली विच इज इंक्लूसिव द मार्केटिंग, वी शुड नो हु इज आवर ऑडियंस. तो ऑडियंस को जानने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन आपका करा, ये पहचानने के लिए कि आप कौन सा डेमोग्राफी से हैं, आपका इंटरेस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो ये चीज को जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द रीजन बीइंग दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम and it becomes my responsibility to understand the deeper insights. And that is the basis of the marketing techniques. So I have got a PPT, and I do not consider that as the Bible, of course, but this is to show you that how the things are written down and how these can be comprehended, और उसको हम inference कैसे करेंगे. So I'm going to share the screen whereby I have this PPT and take the style and कुछ आप notes भी बनाते रहिए because the notes are going to help you in the future run. Of course, this is getting recorded and I told you as a disclaimer that do not rely on the recording, rely on your own self-confidence on yourself. So let me check once again if this is getting recorded. Yes, it is getting recorded, undoubtedly. So we have this PPT. So the topic is AI-powered digital marketing framework for future managers. तो can you tell, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, इस सेंटेंस को, इस फ्रेम को, इस पर्टिकुलर फ्रेज को. तो हमें ये पता चला कि AI पावर्ड है और AI पावर्ड वो क्या है, वो है डिजिटल मार्केटिंग फ्रेमवर्क है और बेसिकली फॉर द फ्यूचर मैनेजर्स. सो कैन एनीबडी टेल मी दैट व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ओवर हियर. मैनेजमेंट की परिभाषा कोई मुझे बता सकता है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, डजंट मैटर. टेल मी व्हाट इज मैनेजमेंट.
Yes. Anybody would like to speak? Please write in the chat box, or you can speak, or you can write the answer in the chat box. Yes, please. What is management? Basically, management is a technique where we can input our skills and knowledge into a different process, segregate into a different process for the same aim, you can say, to achieve the same aim, or for the business growth, or for the self growth as well. Very fine. Thank you, Ms. Puninder, for the answer. I appreciate that. Very nice, insightful. And also, Mr. Dinesh has written management is the process of planning and organizing the resources. Okay. Rama ma'am says it is about controlling people or things. Okay, perfect. Great answer. Anybody else? Anybody else? So I will also tell you the definition from my perspective. So the biggest thing is that everybody is answering from his or her perspective. But actual में देखा जाए तो management is all about that how you manage the present available resources to get the best output. Do you all agree? कि Yes. हमारे पास जितने भी प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए विद द मिनिमम लायबिलिटीज. तो इसको मैं मैनेजमेंट कहूंगा. अब चाहे वो इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, कंपनी कुछ भी हो, हमें प्रेजेंट रिसोर्सेज यूज करने हैं और उसका बेस्ट बेनिफिट उठाना है. और ये भी ध्यान रखना है कि हम सेंटिमेंट्स और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम ग्रो करें. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इन माय humble opinion. Now we talk about the next part, which is going to be the digital marketing. Anybody who like to tell me what is digital marketing? Anybody? So why I am discussing? Because it is absolutely important, of high repute, और इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, डिप्लॉय कैसे करेंगे. Yes, what is digital marketing? What about your answer, Pradita? Please type in the chat box. Okay. Yes, I think Pradita. digital marketing is like a online platform where we can use to promote products or different services to different consumers. Okay, that's great. Nice answer. Good. Anything else apart from this, if you want to add on, Pradita, to this answer? Okay, please add on. Through digital marketing, like we can reach a bigger group of people that we can't through like the normal resources that we had in the previous times. Like now, through digital marketing, we are able to reach a wide range of people all over the world. It is not just a small group in a small locality, but it is a wide area we are covering. Correct, absolutely correct. Thank you for the good answer. I appreciate it. So what I want to cover is that if we talk about the digital marketing in two words, one is the digital and the other is the marketing. So marketing को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग को हिंदी में हम क्या कोई बता सकता है क्या कह सकते हैं मार्केटिंग को हिंदी में? गुलफाम and others, what do you think? Okay, tell me, Pradita, what do you call marketing? Like advertising something, किसी का हिंदी में in प्रचार Hindi. करना किसी चीज का. Okay, प्रचार. Okay, let me tell that marketing को प्रचार नहीं कहते. प्रचार एक सब एक्टिविटी है मार्केटिंग की. तो
तो मार्केटिंग को हम लोग विपणन कहते हैं। हिंदी में वी कॉल द मार्केटिंग एज विपणन। जैसे मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं, इन द सेम मैनर मार्केटिंग इज कॉल्ड विपणन एंड प्रचार इज वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दैट। सो विपणन में हम ना ही केवल प्रचार करते हैं बल्कि अपने ऑडियंस को पहचानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम प्रोसीड करते हैं। दैट इज व्हाट द हिंदी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज। सो बेसिकली इट इज अ फीलिंग ऑफ जॉय, एंथुसियाज्म पैरेलली to interact with people of diverse backgrounds. And the icebreaker question for you is, what is the last thing you did with the AI today? आज आपने recently AI का उपयोग कैसे किया? क्योंकि हम AI powered को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो how did you use the AI today? Anybody who like to write in the chat box कि आपने AI को प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे यूज किया? Yes, anybody? So I give you the options. Either if you are in college, you might have written some answers very well, Denisa, that you have written the project plan. Okay, what else? हो सकता है कोई यहाँ पे शायर है तो उन्होंने अपनी शायरी के लिए कुछ अल्फाज वहां से लिए हैं चैट जीपीटी वगैरह से. Krishna says, I usually make study notes from AI. Okay, perfect. So that means search about some topic for curiosity. That's great. So I believe that every other person is utilizing the AI for the benefit, for the easiness. Okay. So I got the answer that about 90% of the people, they have used AI in some other form. Okay, search for textbooks. Great, Rama ma'am, thank you for that. So everybody is using that. So irrespective of the gender, irrespective of the age, irrespective of the industry. Now coming to the next point, that AI is shaping our choices. So I want to lay some emphasis on the fact, मैं इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं कि AI हमारी choices को shape कर रही है. तो अगर हम AI को मैनेज नहीं करेंगे तो AI हमें मैनेज करेगा. तो today's talk is not about the digital marketing. It is about your own self management and how you manage or how you deploy the artificial intelligence in your life. So बड़ा ही सिंपल है. हमारा रिलायंस पूरा AI पर है. हमने लिखना कम कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है, करेक्ट. और हम जाते हैं, हमें पता है इजी सॉल्यूशन है, तो we go to any of the tool and we deploy that for our own benefit, and that is what management is. But this is not the technique. So that is why I want to discuss the agenda whereby we shall be discussing about the evolution of marketing with AI. What are the core concepts? 5-pillar AI framework, some case studies, brainstorming challenge, and future trends, and some kind of takeaways which you can deploy immediately. So that is by the choice. So हम भी यहाँ choice से हैं, correct everybody? लेकिन did AI tell you that you had to join? No. It is our own effort. It is our own thought process that everybody wanted to learn and upgrade themselves. Then only you are here on this platform. So coming to the next point, that from the traditional to the AI powered marketing, how this is going to change. So I tell you from a very layman perspective, मेरे notes इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि I believe in the practicality of the things. So traditional marketing and AI powered marketing को अगर हम compare करेंगे तो we have the manual analysis, and in AI powered we have predictive analysis. We have static campaigns, we have personalized. हमारा guess work होता था
You remember the time that we were playing Sudoku in the newspapers and all, but now सारी चीजें on the go हैं, on the fly हैं. So that is real time data decisions. और एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता है which is one size fits all. Now, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया is a diverse country whereby we have the temperature, we have the demography, we have the interest behaviors, all segregated, all different. So 20 किलोमीटर में ही हमारी भाषा भी बदल जाती है. हम डायलेक्ट की बात करते हैं, जो लिपि है वो सब चेंज हो जाती है. तो इसका मतलब हम वन साइज फिट्स ऑल कॉन्सेप्ट हम ले ही नहीं सकते. सो दैट मीन्स वी हैव टू माइक्रो टारगेटेड द कंटेंट एंड द स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर. तो हमारा जो शिफ्ट हो चुका है वो इंट्यूटिव से इंटेलिजेंट हो चुका है. सो नाउ इफ देयर आर थंडर स्टॉर्म्स एंड रेन्स टू हैपन, आपको 4 घंटे पहले ही अलर्ट आ जाता है. सो दैट इज द इंटेलिजेंस सिस्टम. तो वो सारी चीजें कैसे डिप्लॉय हो रही हैं, हमें ये पता है कि हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कि वो उसके पीछे एल्गोरिथमिकली क्या चीज है जिसे हम अपना डिप्लॉय कर सकते हैं. सो बैकग्राउंड की चीजें अगर हम जान सकते हैं, this will be easy for us to think. So that is what I want to discuss in the next, that in marketing we study behavior, engagement, storytelling, personalization, and how to deliver the content that sticks. क्या हमारा यही काम है? Mr. Dinesh, if we talk about this scenario, so do you think क्या यही marketing आज हम सभी कर रहे हैं? अपने बायर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिहेवियर समझ रहे हैं और देख के पहचान रहे हैं कि वो बायर कितना पोटेंशियल का है. आज चाहे वो लग्जरी सेगमेंट हो, चाहे वो मीडियम साइज्ड हो, हम देख के पहचान लेते हैं कि उसका पॉकेट साइज क्या है, कि वो हाई टिकट क्लोज होगा या नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अग्री एवरीबॉडी? डू यू अग्री? यस और नो? ओके, परफेक्ट. थैंक यू फॉर द अग्रीमेंट. तो मैं एक चीज और कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज ये है डिजिटल मार्केटिंग में कि हमें उस बायर को पहचानना है, उस लीड को पहचानना है जिसको हम नहीं जानते और जो हमें नहीं जानता. तो टेल मी हाउ इजी और डिफिकल्ट इज दैट? एनीबॉडी? कैन यू? देयर इज अ वर्चुअल बायर सिटिंग एट nowhere. We are having no coordinates of that place, either the x-axis or the y-axis, but we have to sell that item. How to know about that person? Please tell. Anybody? आप भी सोचेंगे what is about the psychography? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसको बेच के दिखाएं? Anybody who like to tell us that how we are going to identify our virtual buyer? Okay, ma'am, that's great. Rama, ma'am, great. Thank you. Nice, good answer. Keywords. Okay, what else? Anybody? अच्छा, मुश्किल है आसान है वर्चुअल बायर को बेचना? SEO, perfect, ma'am. That's great. Okay, that's really sound good, ma'am, that you are aware of these. Okay, their engagement. Okay, Preta says. Okay. What else? Okay, I tell you in the deeper insights कि वो चीज अगर हम स्ट्रैटेजिकली करें तो हमारे लिए बहुत आसान है. कैसे? कि हमको सेशन स्टार्ट करे, अभी मुश्किल से लगभग 20 मिनट हुए हैं, एंड वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम एबल टू बिल्ड द रेपो विद एवरीवन. करेक्ट? मुझे आपके इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस और बाकी सारे से अवगत मैं नहीं हूं,
लेकिन फिर भी we are able to build a repo. So Amog has an answer based on search history, recently viewed items. We can use the data for correct. Absolutely correct. Great. Nice. Identifying and doubling down on niche and making marketing material. Okay, perfect. Nice, good answer, Krishna. तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. जैसे वन साइज फिट्स ऑल शुड नॉट बी अ कॉन्सेप्ट. In the same manner, the strategy cannot be same for different buyers. So we have to understand the buyer and we have to have the different strategy. और उसी strategy में अगर हम AI को deploy करें तो we have the 5 methods, the 5 pillar we call it. I want everyone to make a note of the 5 pillars in the AI marketing framework. The first is going to be the audience intelligence. First is audience intelligence. Okay, perfect. Absolutely. Moksha. Second, we have the content generation. Third is campaign automation. Fourth is predictive analysis. And the last of all is conversational engagement. So who is going to tell us about what is the audience? What is audience? हाँ जी, कोई बता सकते हैं कि ऑडियंस क्या है? Okay, what is audience? Anybody who like to speak? We as a listener, okay, right? That's good. Target, okay, perfect. In the market, who might be interested to buy your product? Okay. Rama ma'am says target. Anybody who would like to speak and describe the audience? What is an audience? People with specific area of interest who engage with their kind of content and products. Okay, perfect. तो identify कैसे करें? Do you have some key points or identifiers कि हम audience को identify कैसे करेंगे? बता सकते हैं? कैसे identify करा जाए? Somebody would like to speak. I want someone to speak on this topic because I want the brainstorming to happen. और जब आप interact करेंगे, I think there will be good that everybody will be listening. So tell me, whosoever wants to speak, please raise your hand and I can unmute that person. And of course, okay, that's great. I like the courage. Okay, tell me, Predita, tell us that what is the audience? Audience is the people who like we would want to reach to communicate to our product that we want to sell. Okay, perfect. Can you elaborate? What do you mean by like how to elaborate audience? Yeah. हाँ, audience को elaborate अगर आप कर पाएं. They are like the potential customers who would like want to buy the product that that our company is like selling, and they might be interested in something like that. All right. Okay. Perfect. Very good. Good answer. Thank you so much. And I'm muting you. Hello. Are you able to hear me? Yes, of course. Please Yes. tell us. This is some kind of an interaction or engagement to get a commitment for whatever you are about to sell or market. This is catching hold of a customer and make him a long-term customer. Okay, ma'am. Very good answer. Nice. Thank you so much. You're welcome. Great. Thanks. Thanks. Thanks a lot. Okay. मैं कुछ add on करना चाहूंगा इसमें. Brilliant answers by everyone. I appreciate that. तो
ऑडियंस को अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से डिफाइन करूं तो ऑडियंस वो एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पॉपुलेशन है, या मैं ह्यूमन बींग्स को कहूंगा या आईपी एड्रेसेस कहूंगा कहूंगा अगर मैं डिजिटली मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट हो या नहीं हो ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो सेम कोहॉर्ट का पार्ट होना जरूरी है. So that means they are having similar interest preferences and they are interested to pursue and grow themselves. तो ये मेरा आंसर होगा जब मैं ऑडियंस को डिफाइन करूंगा. मैं नहीं जानता कि ऑडियंस का कितना परसेंटेज मेरा नीश सेगमेंट है, कितना मेरा प्रोस्पेक्ट है, पर अगर लोग एक ही चीज के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, सो दैट मीन्स ये मेरा ऑडियंस है. यहां पे मेरा काम क्या होगा, एआई क्या करेगा, मेरे ऑडियंस को इंटेलिजेंट बनाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीबॉडी? कि हमारा ऑडियंस हमने जान लिया. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जितना भी ऑडियंस है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं वो 18 प्लस ऑनवर्ड्स हैं, लेकिन उसमें मेरा प्रोस्पेक्ट कौन है ये पहचानना मुश्किल है. तो मैं क्या करूंगा, अपना काम आसान करने के लिए एआई टूल्स की मदद से अपने ऑडियंस को इंटेलिजेंट बनाऊंगा. आई होप दैट इज ओके. डू यू ऑल एग्री? पुनिंदा मैम, रमा मैम एंड एवरीबॉडी हु आंसर्ड. तो मुझे अपने ऑडियंस को इंटेलिजेंट बनाना है. अब इंटेलिजेंट बनाने के लिए मेरे पास जितनी क्षमता है, कैपेसिटी है, दैट आई एम डिप्लॉइंग. लेकिन देखा जाए तो वी हैव 24 आवर्स एंड द लिमिटेड ब्रेन साइज. तो हमने क्या किया कि ह्यूमंस दे हैव designated or delegated the smaller jobs to the artificial intelligence. That means they are virtual machines. Existence we cannot tell about. They are virtual machines and we have fostered them with some knowledge. और वो knowledge है हमारा algorithmic based या हमारा कुछ integrity है, वो हमने हमारे experiences से हमने machines को कुछ information दी है. So that is about the audience making intelligent. And second, the pillar is the content generation. So audience को हमने इंटेलिजेंट बनाया और अपना काम को डेलीगेट करा रोबोट्स की मदद से. तो रोबोट्स के पास जो भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, वी टॉक अबाउट द क्लॉड, इफ वी टॉक अबाउट ग्रॉक और चैट जीपीटी, जेमिनाई और एनी अदर, इट कैन बी परप्लेक्सिटी. तो वो क्या है, वो आंसरिंग मशीन्स हैं. सो दे आर गिविंग यू सम आंसर्स. डीप रिसर्च करते हैं टॉपिक पर, और डीप रिसर्च, कैन यू टेल मी कहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं? वो सब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं सर्च इंजन से, हमारा काम आसान कर रहे हैं. गॉन आर द डेज दैट वी यूज्ड टू पिंग गूगल टू सर्च फॉर द राइट आंसर. लेकिन आज भी अगर हम गूगल टेक्निक को डिप्लॉय करते हैं, दैट मीन्स वी हैव द जेन्युइननेस राइट इन पिक्चर. तो हमें उसी चीज को बरकरार भी रखना है और एआई को सही इस्तेमाल करना है. तो ये हमारा एक पर्टिकुलर मंत्रा है फॉर द डे. नेक्स्ट इज कैंपेन ऑटोमेशन. इस पे हम थोड़ा सा बाद में आते हैं. फर्स्ट आई हैव सम मोर थिंग्स टू डिस्कस अबाउट. सो वी हैव दिस पंच लाइन दैट the global trends and the local realities. So one statement, one phrase I would like to discuss, that we have to think globally, but we have to narrate locally. I repeat, we have to think globally, but we have to narrate locally. वो local इसलिए कि हमको जितना भी बिजनेस मिलना है या जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो सारे लोकल मार्केट में होंगे, लेकिन नजर हमारी होनी चाहिए ग्लोबल ट्रेंड्स पे कि ग्लोबली हम क्या चीज डिप्लॉय करें जिससे हमारे कम शब्दों में ज्यादा बातें हो सके.
And that is what marketing is. So what I'm trying to do here is that with a minimalistic approach, I'm trying to create an ecosystem where we resonate to each other. एंड वही चीज हमें करनी है लोकल मार्केट में. और क्योंकि लोकल मार्केट से ही कमोडिटी हो चाहे सर्विस हो हम उसे सेल कर पाएंगे. और हमें तलाशना है कि हमारा पर्टिकुलर ऑडियंस क्या है. सो द बेस्ट एग्जांपल इज that we have two coffee brands. One is the Cafe Coffee Day and the other is the Starbucks coffee. And the third can be any other. So उनको कैसे पता? क्योंकि they have the outlet and they have to serve the customers who are coming. So how would they know it कि कौन सी चीज कब डिप्लॉय करेंगे? तो उस चीज के लिए इट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल्सो. ये केस स्टडी है जो आप आफ्टर द सेशन आप कर सकते हैं कि अगर कंपैरेटिव मार्केट है, पैरेलल चीजें हैं, उनको हम रेजिडेंटली और रेशनल अप्रोच रखते हुए हाउ कैन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टारगेट ऑडियंस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट डिजिटल मार्केटिंग. In my humble opinion, it is a duo, art and science together. So art, what is art? Anybody? So there are so many artists, I believe. Can you define what is art? Yes, Dinesh sir would like to answer. What is art? Yes, please raise your hand so that I can give the chance and I can unmute that person. Art को हम कैसे define करेंगे? Okay, great, Rutuja. Expressing ourselves non-verbally. Very correct. Nice. Okay, what else? Acha, nice definition. I'm glad. Anybody else? Kindly do not annotate this. That will be shared, not a problem at all. Yes, please. A form of creative expression that reflects ideas, emotions, and imagination. Perfect answer. Good, very good. Thank you both. Amog, art is creative thinking out of the box that capture audiences' attention. Perfect. Great. Kala. Okay. Absolutely great. Thank you for all the answers. So perfect है, आप सब perfect हैं. I think that मेरा भी आंसर इसमें से ही कुछ होगा. You are already perfect in this. Say what words cannot. Very correct, Vivek. So आर्ट में डिफाइन करूंगा कि आर्ट हमें हमारे सपने दिखाती है. और सपने होते हैं विजुअल, लेकिन वो सपने एक्सेस नहीं करते. तो मेरा ये कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारा मेन काम होता है कि क्लाइंट से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट वी हैव टू ब्रिंग द इमेजिनेशन टू द रियलिटी. डू यू ऑल अग्री दैट आर्ट ये होती है कि जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, अज्ञात वस्तु है, लेकिन वी हैव टू ब्रिंग द इमेजिनेशन टू द रियलिटी. तो इमेजिनेशन टू रियलिटी लाने में जो लॉजिक लगेगा उसको मैं साइंस बोलता हूं. सो दैट इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज अ डुओ, आर्ट एंड साइंस. अब साइंस हमें क्या करती है? द आर्ट ऑफ रीजनिंग, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. तो हम अपने से क्वेश्चन करते हैं कि जो क्लाइंट ने हमें इमेजिनेशन दिया है, क्या वो संभव है? क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल इज नथिंग. बट क्या वो हमारे जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, क्या वो उससे फिजिबल है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? विद द प्रेजेंट रिसोर्सेज आई एम ट्राइंग टू फ्रेम अ लॉजिक that with the present resources is this imagination can be brought to the reality. So that is what we have to do it. Now, in this format, it can be any industry, it can be any company, no matter. So someone has annotated this. 1 minute. Let me cross that.
Just a minute. Yes. So, yes, sorry for the inconvenience. So basically, I want to tell that that was art and science. But यहाँ पे एक सबसे बड़ा difference है. The biggest difference is AI is artificial and but हम लोग entrepreneurs हैं. हाँ, we are entrepreneurs. So entrepreneurs क्या कर सकता है? ये उसकी definition है that everybody make a note. The number one is energy, novelty, tenacity, risk taking, empathy, passion, resilience, execution, networking, efficiency, understanding, and resourcefulness. Now, this is something everyone कि ये जो चीज है ये हमारे ना AI में एब्सेंट है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिस इज एब्सेंट. सो इन दैट केस अगर ये AI में एब्सेंट है तो हम में तो प्रेजेंट है. It is absolutely present in us. So what we have to do is we have to bring in to this space कि हम इस चीज का यूज करें. We deploy in our day-to-day lives. And I think everybody is doing that. But हमें थोड़ी सी strategy बदलनी है. Now, what is the strategy? The strategy is this particular case study. So I want to discuss this. So that is why I ask you to bring a pen and paper. तो आप कोई भी business सोचें, may it be automobile business, may it be clothing business or any other, what you need to do is you need to have the eco-friendly and sustainable business आपको सोचना है. And उसके बाद you need to deploy some 5-pillar framework. Is that ready, everyone? Are you all okay with that? A short activity of 10 minutes whereby you need to deploy 5-pillar AI marketing framework. So please tell if you are ready. So audience intelligence, content generation, campaign automation, predictive analysis का और conversational engagement. आप केवल 3 पिलर चूज करिए और ये बिजनेस आपके पास आइडिया है कि इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए और आपको ये बनाना है. ऑडियंस को डिफाइन करना है और टूल्स को चूज करना है और पर्सनलाइजेशन स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे. बताइए, आर यू ऑल ओके विद दैट? अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस फॉर आवर ओन बिजनेस. हम खुद ही बिजनेस चूज करेंगे, खुद ही डिप्लॉय करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ डिस्कशन. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? Can you please type in numeric 1 if you are ready for this? Numeric 1 if you are ready for this practical things. Okay, great. So, wonderful. Only 2 answers. Dinesh sir, what about you? Automobile sector, eco-friendly and sustainable business. Everybody, it is a CSR initiative. Think of the Harley, right? Think of BMW, Ducati. Okay, Vivek. Thank you. Nice. And what about Prerita? Are you ready for that? Tell me, please. I want everyone to be on the same page. Till now, I have got only 3 answers. Yes, everyone? Okay, great. तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं. आई एम जस्ट स्टॉपिंग दैट शेयरिंग फॉर अ व्हाइल. 1 minute. Yes, क्या करना है? There is no breakout room. There is nothing sort. पेन एंड पेपर बेस्ड एक मैकेनिज्म है. पेन एंड पेपर पे आपको
बिजनेस कोई भी आप इमेजिन करिए, कंडीशन सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, राइट? और वो एक फ्यूचरिस्टिक है, जो मैंने आपको बताया, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एनीथिंग। और उसका ऑडियंस आपको पहचानना है, और उसको रीच आउट कैसे करें वो आपको वो बताना है। इट इज a 5-minute टास्क everyone, and everybody has to do it. ठीक है? People who are elder to me in experience and age, they also have to do it, please. And then after, we will have a discussion of 10 minutes. Are you all ready? Now, will you do it? Okay, perfect. केवल 5 मिनट, pen and paper, eco-friendly, sustainable business, and then after we are going to discuss. So I'm here only, take 5 minutes. I'm just muting myself, and it is going to be 7:52, and 7:57 we are going to discuss and resume. Thanks. And of course, anybody would like to share the screen while you are doing something on the mobile or the laptop? अगर आप नोट्स कंप्यूटर पे भी बनाना चाहते हैं या मोबाइल पर, you can share the screen. Tell me if anybody would like to share the screen while doing the work. Please tell. No one? Okay, 5 मिनट आप लीजिए और वो कंप्लीट करिए. We are going to discuss them. Thank you. So Amog has got a beautiful answer that AI can be used to fine-tune performance engines, brands, to make more powerful engines and efficient gains for a margin of price to find audience. Okay, perfect. तो आप ये बता सकते हैं कि एआई को हम यूज कैसे करेंगे 4-व्हीलर सेगमेंट के लिए? यस, ये तो हमें पता है, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिजनेस हमने चूज कर लिया, लेकिन हाउ एआई कैन बी यूजफुल फॉर दैट 4-व्हीलर सेगमेंट? यस, अमो, कैन यू आंसर? मतलब, I frame my question in another words. How is AI making my life easier? Just tell me, keeping in mind that the business is eco-friendly and sustainable. Hanji, Mr. Dinesh, you would like to answer? I hope that is brainstorming for everyone. Is it or not? Hanji, तो AI हमारे लिए लाइफ इजी कैसे कर रहा है पर्टेनिंग टू दिस, और एआई की मदद से हम ऑडियंस को और कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सो आई विल टेल यू द आंसर इन दिस 4th segment also. Anybody who wants to share his or her findings, कि आपने कैसे किया, इकोसिस्टम बिजनेस क्या है, और ऑडियंस को इंटेलिजेंट आप कैसे बना रहे हैं? Engine can be tuned to perform more horsepower and produce less emissions, better for the customer and the environment. Okay, great, perfect, good answer. Okay, Shivam, you want to say? Okay, thank you, Amog. Beautiful answer, good concept, and I will tell you more on this definitely. Yes, my friend Shivam, tell me. Communication. Yes, you can. Thank you. Sir, I am from a tourist place at Ma Sarda Nagri, Mayhar, and I have observed that here a lot of tourists come from other states and foreign as well. And प्रॉब्लम इज कि वो नारियल बहुत तोड़ते हैं, एंड उसका जो सेल्स बचता है नारियल का, वो ऐसे ही फेंक देते हैं. तो वी कैन यूज इट, वी कैन कलेक्ट दैट सेल्स एंड ट्रेन अवर villages to make some utensils, pots, and straw as well. So we can sell that pot straw,
and generate some income for the villagers. And it can be also used like Mahila Sashaktikarana, etc. And for the AI use, we can make a design by the help of AI as well. Very good answer. Impressive, Shivam. Claps for you. That's great. Thank you. Very good answer. And a very genuine concept that you have told. और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है शिवम, अगर आप इस पे बता सकें कि इसको हम एआई की मदद से और कैसे मार्केट में जागरूकता कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस पार्ट, शिवम? Yes, please. Yes, you can speak, I think. You are unmuted. Thank you, sir. Firstly, yeah. Firstly, sir, with the help of we can make a design first, so it be attractive to the new customers. And with the AI, we can also generate a number of like design and other all materials like apart from pot and straw. Sir, am I audible? Yes, perfect. Very good answer. And I would like to discuss off the this webinar as well. This is a good concept. So often I visit a lot of colleges, and I have been a part of incubation centers also. So I think that is a great idea, and of course we can discuss more about it. Thank you. Thank you. I just mute you, and I will unraise your hand, lower your hand. Yes, we have Rama ma'am who wish to speak. Yes, Rama ma'am, you can speak now. Yes, I would like, this is just क्या बोलते हैं, just मेरा idea है. जी. It is about eco farming. Eco farming का you have all the data, okay, soil testing से सब Correct. कुछ सभी तरीके से, वेदर का क्या कंडीशन है, कौन से क्रॉप्स वहां ग्रो कर सकते हैं हम, और कौन कौन से सीजन्स में हम कर सकते हैं, ये डेटा हम लोगों ने एआई में फीड करने से हमको वो दे देगा इनपुट कि कौन से क्रॉप्स अच्छे रहेंगे, इंटरक्रॉपिंग चल सकता है, एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स भी हमारे फार्म के वेस्ट से ही हम बना के उसको we can use it for the farm, and also on the side we can have a cattle like a cow farm where you can generate milk that can be organic, and its waste bio can be used as a fertilizer which is organic and not pesticide which is harmful for the eco environment. Perfect, ma'am. Very good, ma'am. Nice. One more thing is, if there is, there are drones in agriculture right now, which can find out which particular plant is being affected by some insects. Absolutely correct, ma'am. There that drone will drop the fertilizer or pesticide so that it can stop then and there, not spread to any other plants nearby. Okay. So these are eco this thing. Then what is your target audience? जो हमारे सेहत पे जो those who are very conscious about health. And they can afford the price. This is a niche market where people are conscious about their health. They do not want to buy any ordinary stuff from the market, but they want. And then farm visits can also be encouraged by advertising, marketing, so that your farm is very exclusive, meant for a target audience. This is my business idea. Very great, ma'am. That's a beautiful concept.
And Thank hats you. off to you that you are having such thought process. Great, ma'am. Awesome. Fab. Good, ma'am. Thank you. Thanks. Okay. Great, ma'am. Anybody else who would like to tell us? Anybody? Okay. We'll proceed then. We have some answers. I would like to recite them. So we have answers from Predita. 1 minute. Yes. So just a minute. Okay. AI can also detect car issues early and help brands understand customer needs. Okay. I tell you that just like the money saved is money earned, in the same manner, अगर गाड़ी कोई ड्राइव कर रहा है 4 व्हीलर और फ्यूल का इस्तेमाल कम हो रहा है, सो दैट मीन्स द फ्यूल इज गेटिंग सेव्ड. तो एआई की मदद से अमोग हैज रिटन अ ग्रेट आंसर. अगर एआई की मदद से हम फ्यूल का कंजप्शन वीकन कर दें, कम कर दें, राइट, तो इन दैट केस it is altogether the sustainable also. So that is one aspect, right? And the other can be कि roadside accidents अगर हम डिटेक्शन कर लें, या ब्लाइंड स्पॉट है, या उसका हम डिटेक्शन पहले कर लें, I think that can be a good concept which can lead to this as well. So definitely we have to think out of the box. We have to ideate. We have to get some innovative ideas to bring in that situation. So another time I'm going to share the screen whereby we shall be proceeding ahead with the inclusive of everything program. So that this activity has been really great. Thank you everyone who contributed to this. And I wish everyone, please do it once it is over. This is good for you in the future as well. So now we have some of the top AI tools for the managers, which are absolutely free of cost. And I would like to give you some references because I have discussed with you what is management. I have discussed with you what is digital marketing. And I wish to discuss some of the AI tools as well, which are needful for today. So before I discuss with that, I'm assuming that everybody is into the different business. They are into either education or they are into profession. Now, in that case, do you think that every segment they have the same set of AI tools? Please tell. Every segment or every person, do they have the same set of AI tools for everything? Yes or no? And in case the answer is no, can you precisely tell what are the AI tools that you deploy for your day-to-day works or the chores? Anybody who would like to tell us that what are the AI tools that you deploy to make your work easy? Okay, very correct, ma'am. Absolutely. So, can you please tell us what are the AI tools that you use on a day-to-day basis for your own business or managing your work? So, the answer is no, specifically and precisely also. Why? Because just like the situations are all different, the AI tools also have to be different. One size fits all is never the concept. So please write everybody. I'm sure that everybody is using the AI tools, but what are the tools that you are using? बता सकते हैं? गुलफाम, आप कौन सा टूल यूज करते हैं AI का? AI tool specifically, and you have to write the purpose also. Predita, what tool you use and what is the purpose? Anybody?
Okay. Okay, Predita, tell us, please. Like I use Alexa for reminders and for voice commands, and sometimes even to play some songs. And also I use Grammarly when I need to correct a message that I'm writing and make some grammatical changes. Mm-hmm. I also use ChatGPT for some research and for productivity. Mm-hmm. That's And great. I use Camera AI for facial recognitions and filters. Okay, wonderful. कैमरा की आपने बात करी है तो सारी पिक्चर एक ही क्वालिटी की होती हैं क्या? There is क्योंकि some. कैमरा एक है तो उसके पीछे का डू यू नो द मैकेनिज्म की अपर्चर कैसे सेट होता है, कैंडिड फोटोग्राफी कैसे हम ले एक ही कैमरा से ले पाते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? No. ओके, फेशियल रिकॉग्निशन कैसे काम करता है? Like like when like a face is there तो वो उस पे पूरा फोकस कर देता है उस मोमेंट पे, बाकी राइट, आज. एब्सोल्युटली, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट, थैंक यू फॉर द आंसर, गुड, थैंक्स. So, absolutely image processing, zooming color. Okay, perfect. Thank you. Good answer. What else? Perplexity and ChatGPT for getting information for my MBA courses, research, case studies, Canva for PPTs. Very good answer. Okay. तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि हम हम कोई भी चीज नई नहीं कर रहे. We are only discovering. We are not inventing at all, right? So that means कि वो चीज हम सर्च करते हैं जो हम जानते हैं. Do you all agree that we search everything which we already know it, and the things which we do not know it, we cannot even search because that lie beyond our knowledge diaspora. So that means AI is something which is not a hype at all. This is something which you already know it, but it is getting discovered at a faster pace. That is the only difference. So if we have the AI tools for this particular free of cost, that does not mean at all that we rely completely on that. Absolutely, yes. So Vivek says Copilot for summarizing the data. And I have a phrase also with the Copilot that I will tell you the last. Okay. Predita says I use Pabil, a website, okay, which help me in the studies where we can generate the course structure. Okay, absolutely great. So the biggest revolution in the edtech brand or the education is that the Khan Academy or many other academies, they are also deploying artificial intelligence in the chatbot and various other things. Okay. Prompt engineering is about knowing the subject. Very great answer. And everybody is aware of the Netflix also. Is Netflix free of cost? Tell me. Anybody? No, it is not free. So in that case, I'm pretty sure that 90% of the people who are present here, they have got the Netflix. ठीक कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास नेटफ्लिक्स है. Okay, right, ma'am. I said 90%, right? 90%. So अगर वो फ्री नहीं है फिर भी हमारे पास है, उसका रीजन जान सकता हूं? Okay, 90% में आप भी हैं, right? That's good. Anybody who would like to tell us what is something special about the Netflix? Something special. Yes, everyone. Okay, as it has a lot of shows. Okay, और कुछ diverse content. अच्छी बात है. और कुछ? Okay, the dopamine and easy to use, right?
That's good. Nice. Thank you. So, of course, you don't feel out the fear of missing out. ये बात सही है. Do you all, when you are using the Netflix, do you feel fear of missing out at any moment? बताइए. नहीं, बिल्कुल नहीं. अब यही रेसिपी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स एक फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म था, अब तो बाकी सब ने किया डिप्लॉय, कि उसमें एआई का इस्तेमाल इस प्रकार से है कि आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप फोन कॉल भी कर रहे हैं, और फोन में आपने पर्टिकुलर कमोडिटी या किसी चीज का आपने जिक्र किया है, तो तुरंत नेटफ्लिक्स आपको वही चीज दिखा देगा. ऐसा होता है. Have you seen such a times that you talk about something over the call and immediately Netflix show you as a notification? Now that is something the AI power. और AI को हम यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के लिए ताकि एंगेजमेंट बना रहे. फोन कॉल्स एनक्रिप्टेड हैं, बट आप क्या करते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप उसको ना अलाउ करते हैं. तो जब आप अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं, सो दैट मीन्स द एआई इज ऑलरेडी यूजिंग दैट, और द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी यूज दैट कुकीज. तो इसलिए वो एनक्रिप्शन वीक हो जाता है. राइट एवरीवन. सो ये चीज होती है. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम नहीं जानते कि वो चीज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, बट वी हैव टू यूज इट इन द राइट डायरेक्शन एंड फॉर द बेनिफिट. सो आज का सेशन ही हमारा एजेंडा ये था कि डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस हम करेंगे, लेकिन उस ब्रैकेट में अंदर जहां पे एआई पावर्ड है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विच आई वांट टू डिस्कस. Thank you for all the answers. I am humbled. That's great. So, can you tell me what is SEO? Anybody who belongs to this industry or not? Anybody who would like to tell us what is SEO? Okay, search engine optimization. That's great. Perfect. Very good. What else apart from this? और क्या बता सकते हैं एसईओ के बारे में? ये तो फुल फॉर्म है, शिवम. Amok to make your website appear on the top of the results on the browser. Are you sure, Amok? Okay, Pradita. Okay, nice, good answers. Tools for getting engagement and helps rank higher. Throwing up your choice. Okay, perfect. So, Amog, is your answer final, or you want to make a correction? Okay, SEO will make the website traffic worse. Okay, so I tell you, thank you for all the answers. SEO is not a new concept. So I just traveled in the time machine and go back. So when I was discussing about the audience and your introduction, so consider that I am a search engine. Consider that I am a search engine and you are the participating websites. And I don't know you and you don't know me. Now what we did over the time, we have been discussing this for more than 1 hour. That means 1 hour 20 minutes, and we have build a repo. Yes or no, everyone? Do you agree that we have built a repo? तो वही रेपो हमें वेबसाइट और गूगल के साथ भी या किसी भी सर्च इंजन के साथ हमें रेपो बिल्डअप करना है. So this repo building is called the SEO. तो SEO की एक एक्टिविटी है जिसमें हम
ब्राउजर पे नहीं अमोघ, हम ट्राई करते हैं कि सर्च इंजन की लिस्ट में हमारा आंसर टॉप पे आए, नॉट इन द ब्राउजर प्लीज. So we want our result to appear in the top results of any search engine. और जब हम रेपो बिल्ड करके एक हैंडशेक करते हैं और अपनी वेबसाइट को सोशली भी एक्टिव करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को और द सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज को एसईओ बोला जाता है. इज दैट करेक्ट एवरीवन? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसईओ मैनुअल है या ऑटोमेटेड है? सो SEO, I should tell you that SEO is a technique where today also the logic and the strategy that is useful, because Google never says, Google still believes in the fact that the Rome was not built in a day. In the same manner, the SEO has to be intelligent, but it should not be suppressive at all. Why? Because it is not about the concept that last in, first out. It is about the biasing, equal opportunity, equal merit. So that is what SEO is. So SEO को हम लोग और इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? उसका आंसर है कि हम अगर गूगल से जो भी रेपो बिल्ड करना है, अगर हम रेपो बिल्डिंग करते समय कॉम्प्लायंसेस का ध्यान रखें, if we consider the compliances and we understand the algorithms well, I think the work becomes easier. Do you all agree to this point? Please type in numeric 1 if you agree to this particular statement, which I have explained to you. Okay, that's great. Thank you for the answer. Now coming to this point is कि हम एसईओ को और इंटेलिजेंट कैसे बनाएं? Do you have anything to add on to this? How to make SEO more intelligent? Yes, anybody would like to speak? Because I think it is the ultra brainstorming session going on, and I want people who even don't belong to this industry can speak up. That will be a great thing. कि हम एसईओ को और इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? Anybody who would like to speak up? He or she can raise the hands. Okay, feed it with the correct relatable words. Perfect, ma'am. Absolutely, by providing specific and accurate data. Okay, wonderful. Okay, great. What else? Very, very correct answer. Understanding the user intent. Perfect. Okay. What else? अच्छा, ये चीज और बता सकते हैं आप कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग रिजल्ट्स हैं, क्या उन सब की अथॉरिटी आपके पास है? जितने भी पार्टिसिपेटिंग रिजल्ट्स हैं गूगल में, चाहे एनी ऑफ द सर्च इंजन, डू यू हैव द अथॉरिटी फॉर ऑल ऑफ देम? SEO is based on website code. Gemini can be used to help. Okay, but it can't be automated. Okay. So अगर हमारे पास दूसरों की अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास हमारी है, right? तो in that case, there is a saying, if you help yourself, the God will help you. Correct, everyone? तो हमें क्या करना है? हमारे ही रिजल्ट को इतना इफेक्टिव, इंपैक्टफुल बनाना है कि सर्च इंजन उसको एलिवेट करे. अब उसको एलिवेट कैसे करेगा? तो गूगल के सामने एक अपॉर्चुनिटी है. गूगल का अपॉर्चुनिटी ये है कि गूगल डज नॉट वांट इट्स ट्रैफिक टू गो बैक टू any other search engine. Now that is the Google's problem. And if we understand Google's problem well, certainly we can amend my result. We can create my result more intelligent, that Google understand the hierarchy and it can
elevate my result. So that is what we have to do it. If we talk about the keywords, if we talk about the right hierarchy, headings, structure of the page, UI, UX phenomena, because AI tools are super intelligent that they can tell whether the user is feeling the right or not. Do we have the tools who can detect the even the mood and the behavior of the person, right? So any person, there are so many emojis. So this particular phenomena has been effectively used by the Swiggy and Zomato, the food companies, whereby they can easily detect the mood of the person. And immediately the chat box rises up and throwbacks the question that are you not feeling good? Are you not feeling hungry today? Yes, absolutely. And immediately you have a smile on a face and you order the food. And that is what Goes that. Just allow me a quick minute, please. Yes, everyone. So sorry for the inconvenience. I hope it is audible clearly. Okay, Rama ma'am, I give you the chance to speak up. 1 minute, please. Uh, just a minute. Yes, please. Yes, ma'am. You can speak now in the group. Thank you. Yes. Thanks for the opportunity. Like you're saying about Zomato, Swiggy, these are examples. I recall when I joined the Taj Group of Hotels in 1990, there was a database where for each and every guest is the king. It just like in the bank, you see, guest is the king, customer is king. In the hotel, guest is the king. Even if he makes a mistake, shouts, whatever, nobody is allowed to answer back or behave badly with the guest. That was one rule that we all had to follow. There, one guest, they will create a profile of the guest, what he likes, what he doesn't like. Has he got some allergies? Is he very particular about the room temperature being set at 26 or 23 or 28, whatever it is? All these things are going into the database. Then, when the guest comes the next time, he doesn't even have to ask or request. It will be set as per his wish. Even the soap that he prefers, that is placed even before he can ask for it. This is what was done in 1990s itself by the Tata Group. I would like to share that now ये ज़माना आया है जहाँ आपका food preference सभी को मालूम होता है या whatever of the food that you order. But in the hotel industry, it's given top priority. Somebody wants economic times, and it will be there when she or he arrives. That room will have economic times of that day. So these Correct, are ma'am. things that we learned on the job, that customer preference is the topmost priority for anything. Thank you for the opportunity, Kapil. Thank you. Ma'am, you had a very insightful information. Thank you. Even that was new for us, most of us. And thank you for enlightening us with such insightful knowledge. Thank you so much. Sure, sure. Thank you. Yeah, I was discussing about that. We have such kind of techniques whereby we make our work easier. Now, coming to the next part, these were some of the glimpse of the free tools available, top AI tools for the managers. And of course, here are some of the tools which are paid. So, of course, you can take the screenshot or this will be shared, of course.
So this will give you the idea that how effectively these tools can be used to make our lives easier. Now, another brainstorming thing and discussion I want to have, that in the market there is so much of information, right? Every other day you have got so many reels coming up, and they are throwing upon you. And not even they are throwing upon you, you choose them. You choose to view the reels or watch the reels for more than 2 hours at a stretch. So that means अगर देखा जाए एक इंसाइटफुल नजर से हम अगर देखें एक तो हम दिन भर में एक चौथाई दिन मतलब 6 घंटा हम लोग केवल स्क्रॉल कर रहे हैं एंड द स्क्रीन टाइम इज मोर देन 6 hours, correct? But the question arises that are we getting paid for that? Tell me, are we getting paid for that? Or in other sense, are we making any single rupee? Because if we are working in an office and there is a single minute of the delay in the salary or in the office premises, we have the feeling of annoying. Yeah, right. So in that case, अगर वो annoying है, right? तो वो चीज को हम कैसे रेसिलेंट करें या हम कैसे बैक ट्रैक करें? ओके, तो स्क्रीन वॉच इतना इतना सारा कंटेंट है और उसके बीच में हमारे पास नॉलेज अपडेट भी है. वी हैव लॉट ऑफ फिलोसफिकल टॉक्स आल्सो. पीपल आर टॉकिंग अबाउट a 5-year-old chap is talking about the philosophy, Socrates, and वामपंथी की बात हो रही है. तो टेल मी कि हमें कौन से टूल पे रिलायंस होना चाहिए, कौन से पे नहीं होना चाहिए, राइट? कैन यू टेल मी दैट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव which of the reel or which of the tool is more beneficial? और आपको ऐसा लगता है कि we are victimized, कि हमें इतना सारा ज्ञान है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम करें? So tell me your insights, because your insights will be helpful for everybody of us. So tell me कि इतनी टेक्नोलॉजिकली और कौन से टूल्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं सभी रील्स में, तो वो चीज को हमें कैसे वैलिडेट करना चाहिए? एनी आंसर फॉर दैट? हाउ टू वैलिडेट दैट कि वो हमारे लिए लाभकारी है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि एआई टूल हमारे जो इंटरनल या कोई भी पॉलिसी है उसको ब्रीच कर दे. Do you have anything to add on to this? How to validate that particular tool or particular knowledge that is throwing upon you deliberately? Yes, please. Anybody? Hanji. Anybody who would like to add on to this? Okay. I tell you कि वैलिडेशन, हम वैलिडेशन ना करें. सबसे पहले हमें अपने को जानना है. मेरा आंसर ये है, आपका हो सकता आंसर डिफरेंट हो. पहले मैं अपने को जानूं कि मैं किस डायस्पोरा में, मैं किस कोहॉर्ट में. क्योंकि आप डेटा को बंद नहीं कर सकते, आप इंटरनेट को स्टॉप नहीं कर सकते. What you can do is you have to identify yourself, your pursuits, and then you need to identify your in the near future objectives. तो अगर वो objectives आप पहचानेंगे, I think उसके बाद आपको वैलिडेशन प्रोसेस इजी हो जाए. क्यों? क्योंकि अगर आपको 100 में से 10 छांटने हो वो मुश्किल काम है. अगर आपको 20 में से 10 आपको सेलेक्ट करने हो, दैट इज गोइंग टू बी द इजियर अप्रोच. आई होप दैट इज एग्रीएबल, that you need to identify what are you, and based on that you need to find out is that thing worthy or not.
So that is the validation technique which I want to tell. अब वो validation के लिए हमारे पास glossary भी होनी चाहिए. Yes. So should a manager rely completely? Now this is the question. Now any person, if it is a female who is a anybody who is managing every other task also, then also the person is the manager. And should a manager rely completely? So here is a list which I want to tell you that the different tools are made for different people and different segments. So if we use Claude, so Claude is basically, it is a high polished tool. It is a free tool, however, for some limited time period. So basically Claude is what? Professionals. The second term or the second tool which I want to tell you is Google Gemini is preferably for Google integrations. Why Google integrations? To ease the coding work of the developers. So before, they were used to write the code, lengthy code, and everything was taking huge toll on us. But we have coined this, that we have Google Gemini for the Google integrations as well. Then we have Zapier. Now Zapier is something whereby if we have to deploy the chatbot, and then in that case, we have to use that Zapier. So Microsoft Copilot, right? So can you tell me what is the meaning of Copilot? Anybody? Who is a Copilot? And why this name Copilot? Yes, anybody? Co-pilot, assistant. Okay. What else? ओके एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मैं. आपने कभी ध्यान दिया कि जो फर्स्ट वाला टूल है जिसका नाम मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, जो पहला टूल है इसका मीनिंग क्या है? आपको चेक नहीं करना अभी. इसका नाम क्लॉड क्यों रखा गया? जो पहला टूल है हमारे सामने, क्लॉड फॉर प्रोफेशनल्स, उसका नाम क्लॉड क्यों रखा गया? So I just break the ice to tell you that Claude is taken from a French word, and Claude means the person who is lame. Yes, the person who is lame. Okay. अब इसी कॉन्टोर लाइंस पे पैरेलली हम अगर ये सोचें कि को पायलट का मतलब क्या है, को पायलट, क्लॉड, ये सारे वो टर्म्स हैं जो खुद डिस्क्राइब करते हैं कि वो पूरी तरह सक्षम नहीं. राइट? क्लॉड एंड को पायलट. को पायलट इज समथिंग हु इज द असिस्टेंट एंड क्लॉड इज समथिंग हु इज द लेम पर्सन. नाउ इन दैट केस वो जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि हमें सहारा चाहिए, हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, हमें चीजें फॉस्टर करे, हमें इंटेलिजेंट बनाए. राइट? एब्सोल्युटली. सो दैट मीन्स द पायलट इज द पर्सन हु इज अ ह्यूमन बीइंग, हु इज द इंटेलिजेंट पर्सन. In the same manner, so they have described themselves for that particular reasons. So हमें अगर वो रीजन समझ में आ जाए, एल्गोरिथम समझ में आ जाए, तो आई थिंक हमें रीजनिंग और आईक्यू लेवल कभी भी कम नहीं पड़ता. एंड देन वी हैव द डीप सीक ऑल्सो. वी हैव डीप सीक फॉर द रीजनिंग मॉडल. अब रीजनिंग मॉडल कैसे? हमें लॉजिक ग्रेड्स क्रिएट करना है, हमें सेक्शंस करना है कि इस पर्टिकुलर डेडलॉक अगर वो अपीयर होता है तो वो डेडलॉक को सॉल्व कैसे करें. अगर हमारे पास लग्जरी व्हीकल है which is fully automated like Lexus and others, right? Tesla.
नाउ इन दैट केस अगर हमारा लग्जरी व्हीकल स्टॉप हो जाता है, डेड एंड आ जाता है, तो हमारी रीजनिंग कैसे काम करेगी? तो ऐसा क्या होना चाहिए? डिटेक्शन, जो पहले से डिटेक्शन हो जाए, उसके लिए हम डीप सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? Perplexity is the word coming from the confusion, perplex, right? In the same manner, it is trying to search the web, and it is giving us so many insightful knowledge that the confusion is. And so I come to this kind of validation that these tools are for different individuals, and you have to choose first who you are, and then you have to use that. And in kind of symphony, you have to create some sync with the art and science altogether. Now we come to this, that what exactly do we need? ये चीज मैंने आपको बताई. What exactly does the manager need from anything? And the question is the same, that should a manager rely completely? तो हमें आंसर ये है कि हमें चाहिए, we have to do something better. Second, something easy to manage. Third, we have to go for the wider and broad vision. और लास्ट में हमें ये चाहिए कि हम रिलायबल हो, हमारा कोई भी डिप्लॉयमेंट रॉबस्ट हो, और तीसरा हमारा रैशनल. So I believe, number one, we have to do something better, something easy to manage, wider and broad horizon or the vision, and then we have the reliable, robust and rational approach. तो यही चीज जब हमें चाहिए, तो आंसर इज कि हमें एआई टूल्स को यूज क्यों करना चाहिए, उसकी मैंने समरी यहाँ पे लिखी है. सो द समरी इज स्पीड एंड एफिशिएंसी, डेटा इंसाइट्स, क्रिएटिविटी बूस्ट, कंसिस्टेंसी. सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, and this particular will be uploaded over the internet and you can access that as well. And after that, we have the limitation and why it matters. So limitation is something that the AI lacks human content. AI can make biased decisions. For example, हमने AI से क्वेश्चन किया कि ऐसा मेरा मूड स्विंग है, I'm feeling this kind of I'm having this kind of feeling, and alternatively I ask the opposite question. So in that case, AI cannot understand that particular terminology or that particular kind of feeling. Okay, तो वो क्या करता है, हमें आंसर एक ही बाइसिंग पे देता रहता है, बल्कि ये गलत अप्रोच है. So that is something which AI and common sense, which human beings only have as of now, right? We never know what would happen in the next decade or some years to go. And the third point is that AI needs supervision. So a tool like ChatGPT can give us hallucinations also, or something oversimplified, right? Then we have ethical and legal hacks also. And the biggest point is that the code that the AI is giving to us, कि आज हम सब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, बट हमें नहीं पता उस कोड में कोई ट्रोजन हॉर्स है, कोई वायरस है, या डेटा हमारा कितना कॉपीड है. वी हैव द प्लेजरिज्म, हाउ मच वी नो इट, वी नेवर नो दैट. सो किसी ने उसको कोड इंजेक्ट किया है, और वो कोड इंजेक्ट करके आपके डेटा को स्टील भी कर सकता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ लीगल रिस्क and ethical reasons that we cannot rely completely over the AI tools. Now, next is that we have to have the in-depth analysis, vision, goals, strategy, tactics, operation, and then after we have to have the documentation. Now, documentation is within the brain. It is not on the paper that we are writing, but in this process,
You should not rush at all. So I hope till now everything is clear. Do you have any questions as of now? As of now, I give the chance to everyone to ask or raise any questions if you have as of, because we have we have about 5 to 6 more minutes to go. So tell me if you have any questions. Very good answer, Shivam. Right? Any questions? Okay, no. So the last PPT we have. It is really great that you people are here. So the last PPT for the 5 to 7 minutes we have, that we have to use AI as a co-pilot, as I told you, that not as a autopilot. So autopilot में हम सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सुरक्षा का घेरा हमारा दिमाग है, हमारा सोचने का तरीका है, हमारा मनस है. अगर वो चीज को हम ऑटोपायलट पे ले आए, so that means we are at the risk, higher risk. And second is augment your judgment, do not replace it. हमारा जजमेंट का तरीका, हमारा रेशनल थिंकिंग और ओपिनियंस हमारी होनी चाहिए. हम ये नहीं कि छोटा सा अगर काम ज्यादा है हमने एआई को कंट्रोल दे दिया, जी आप कर लो. नो, इट इज नॉट द फैक्ट. Second is always review, edit, and personalize AI outputs. It is a recommendation, everyone, that you have to review, edit, and personalize them. Human touch is missing in most of the tools, may it be ChatGPT, may it be Perplexity, may it be Gemini. But what you have to do is you have to humanize it. और ह्यूमनाइज करने के लिए सबसे आसान है that whatever you have learned in the school life, that is going to help. Your vocabulary, your dictionary, and whatever you have learned while reading the book, that is going to help. So it is not about the any person, may be Mr. Shashi Tharoor or Kumar Vishwas. It is all about the glossary and the words that they have really learned over the years. Next is the focus on the strategy, not the tools. अगर हम टूल्स के ऊपर निर्भर हैं तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय वो करेगा. तो अगर ऐसा है तो हमारा कैंपेन अनडिफाइंड है. My campaign is not defined at all. And I think of the horizon. Of course, how can we integrate AI to improve livelihood of person and also not affect other jobs? Okay. ठीक है. I will discuss that, of course. Thank you for this answer, and this is really very good, valuable. So the last is keep the human empathy in every AI campaign, of course. तो इसका लाइव एग्जांपल ये है कि आज जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, वो पर्सनलाइज करते हैं चीजें. राइट? पर्सनलाइज कैसे कि अगर पर्टिकुलर कोहॉर्ट को ब्राउन कलर पसंद है तो वो पर्सनलाइज तरीका हो जाएगा. और यू शुड हैव द फीलिंग ऑल्सो कि ये भी फीलिंग हो सकती है कि ये एड केवल हमारे लिए ही बनाया गया. दिस कैन बी द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन that can be attained. So that is the subject which I want to discuss. Also, now I have one query from Amog that is very genuine. Okay, I take the queries now. And he says, how can we integrate AI to improve livelihood of people and also not affect other jobs? तो देखा जाए तो जैसे रमा मैम ने एग्जांपल लिया पहले टाइम्स का 1990, that decade. So that was a perfect example to relate कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसमें स्मार्ट लोगों की नीड है. और स्मार्ट लोगों की नीड है because the systems are changing, because every ecosystem is getting changed. In that case, जो पर्सन ब्रेनी है वो AI का इस्तेमाल करेगा. और कंपनी भी जानती हैं, इंडस्ट्री भी जानती है कि जहां तक ह्यूमन रिसोर्सेज का सवाल है
वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम मिनिमाइज एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, राइट? तो वो हार्ड वर्क का आजकल इकोसिस्टम नहीं है, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, आई वुड से आमोग. So the person has to be smarter, and that person has to be multi-skilled, multiple skilled. In that case, AI or even God cannot replace that. So my answer would be कि AI को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें, because companies know it that the human intervention is necessary to automate that process, but the automation cannot create another automation. I hope you will agree to this point. I repeat my statement again that one automation cannot replicate another automation because that needs a trigger. And who is going to trigger that? It is a human being. It is a human intervention. Oh, okay. I hope I answered your question. I hope some US-based companies that already laid off. You are right in that particular approach, but every other thing is getting automated. There will be the loss of jobs as well, but the only thing is that just like the world is changing, we have to grow ourselves. We have to make ourselves more smarter. So the concept is that I take my example, people. I don't praise myself. I'm just taking my example that I saw this opportunity. I was also an employee, and I raised myself from an employee to the employer so that I become sufficient and I give employment to other people as well. So that is my key takeaway, that I was never worried about my job. I took a stake, I took a calculated risk so that I learned and I tried to become the solution for this, which is the question you have asked. Okay, my friend. तो ये चीज है, ये कॉन्टेंट्स रहेगी. आपको अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर आप हैं, एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हैं, सो देन आल्सो यू हैव टू लर्न द इंजीनियरिंग द राइट, द मैनेजमेंट द राइट, राइट. तो हम इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि व्हाई देयर इज अ ले ऑफ. द सिंपल आंसर इज यू हैव टू गेट स्मार्टर. This is a bitter truth and the actual factful truth as well. Okay, I hope I answered. Anybody else who would like to ask anything? Yes, anyone else, please? And after that, that is the last point. And of course, people who are here, present here, you can scan the QR code and you are always welcome to stay connected. If you have any more questions, you can ask now. Anything you would like to say as a feedback for us? I hope you liked the session, or anything you would like to discuss. Pradita, I call upon you. Amog, Punanda ma'am. Punanda ma'am has been a great, consistent learner, and she's the part. And there are other people, thanks to all who has been a part of this. And without your support, without everybody's presence, it was impossible to be a part. Thanks, we have Rinjim, we have Sambhav, Vivek, everyone. And thank you once again that you took out time on this special weekend. And of course, the rainy season in north part of India and every part of India as well. So it is a great opportunity. And with all my hands folded, I would like to thank you for the participation. And in case you have any queries, you are most welcome to stay connected. Thank you, everyone. Take care of yourself, your family, and enjoy the weekend. Thank you so much. Thank you so much for the kind words. And we will try our level best to make it more engaging and more brainstorming in the days to come. Thanks, everyone. Good day. Right. Thank you.
And of course, the recording will be shared. Not to worry at all. As already mentioned in your email. Thank you so much.